ताकि हम बोरिंग जो है वो कम करें, लेकिन lending to the private sector as well. So equity and the debt markets have to come to the fore so that we can diversify the funding base as we go forward. तो ये अंडर आकिब साहब आपकी लीडरशिप में ये जो कैपिटल मार्केट्स का एजेंडा है ये हमने इंशाल्लाह आगे लेकर जाना है. Now coming to the subject at hand, which is the building जो अब आज जिसका ground breaking की आज बात है. It's a bit unfortunate because of the inclement weather that we cannot actually be at the site where the inshallah the construction is going to begin soon. तो ये 24 साल पहले आइडिया कंसीव किया गया, and therefore it's very befitting that the Deputy Prime Minister was asked to be here as a chief guest. कि अगर उनके ये हाथों से ये बात शुरू हुई और तो I think it's important कि now we sort of take it forward. और अब इसको 24 साल नहीं लगाने सर कंस्ट्रक्शन में. अब इसको कोशिश करें कि अगर यहाँ प्राइम मिनिस्टर होते तो वो कहते हैं कि 1 साल में इसको कंप्लीट कर दें, लेकिन हम आपको थोड़े से साल और दे देंगे, जो कि आपके प्रोजेक्ट मैनेजर्स ने आपको बात की. ऑफ कोर्स एज अ सक्सेसर टू कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी, एंड दैट्स वेयर शमीम अहमद खान साहब, इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, इनका बड़ा लीडरशिप का रोल है कि इसको आगे ये कैसे लेकर चले. But now you are a unified regulator for the corporate sector, capital market, NBFIs and the insurance sector. मैं बात कर चुका हूँ कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट की कि इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमने मॉडर्निटी लानी है, एफिशिएंसी लानी है, ट्रांसपेरेंसी लानी है, तो it is going to come through the capital markets as we go forward. आपका दूसरा जो critical function है is being the guardian of public interest and ensuring that markets remain fair, transparent and accountable. और ये बहुत ही एक I would say delicate balancing act है कि how far do you go? You have to do what you need to do to ensure कि इसमें जो fairness और transparency हो, but उस level तक भी ना जाए कि जो industry है वो stifle हो जाए. So I think it's a very delicate balancing act that all of you along with your commissioners need to do as a primary regulator. और इसमें जो आपका regulatory framework है उसमें investor education है, developing new financial projects है, leveraging technology है. और देखिए मैं हमेशा बात करता हूँ किसी भी transformation में it's people process technology. So हम technology की बहुत बात करते हैं and at times we think that is the actual nirvana कि हम हर चीज़ को automate कर दें. But if you have broken processes and if you automate those broken processes, then the whole thing is not going to move forward. तो उस लिहाज से मैं I just want to again acknowledge you and your team कि आपने इतने छोटे और short span of time में आपने जो सारी काविशें की हैं और बड़े important आपने steps लिए हैं to align local markets with international standards. उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने जो reducing IPO timelines है. I think that's a fantastic thing because the number of companies which have to now come to the equity capital markets, I think it's absolutely critical. अगर हमने इस मुल्क को आगे लेकर जाना है तो ये जो everything that we are doing on the ECM side is going to be very important. और ये corporate filings at the top of the house, but also in the GEM space as well, is absolutely critical as we go forward. मैं जो आपका strategic plan आपने बनाया है insurance sector का उसके मुताबिक already बात कर चुका हूँ. Digital transformation, please keep on doing it and keep on going forward. जितनी हम human intervention कम कर सकें, that's about ease of doing business. तो वो आप उस पर ज़रूर उस पर करते जाइए. जो आपका professional clearing member regime and launch of centralized gateway portal for onboarding of investors in capital markets is fantastic. ESG initiatives, I think ये आज से हम इस वक्त बात करते हैं कि हमें $1 billion चाहिए या $500 million चाहिए, $500 million चाहिए. इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह इस किस्म की इस्तिताअत है कि the moment sentiment changes, it's only 3 years back that WAPDA did the inaugural green bond. और अगर आपको याद हो तो उस वक्त $500 million की issuance हुई थी. The book size was actually $3 billion and WAPDA did not decide to exercise the green shoe option. अगर वो $750 million ले जाते तो इस किस्म की appetite है इस मुल्क पे inshallah as we go back with our ratings
एंड सो वो फंडिंग की कभी भी हमारे पास कमी नहीं रही है एज द सर्टेनिटी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कम्स बैक। और उसके अलावा जो आप इनोवेशन को इनकरेज कर रहे हैं थ्रू रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, आई वुड सजेस्ट दैट यू कंटिन्यू टू डू दैट। आपने ऑलरेडी लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की मदद मांगी है, और विद रिस्पेक्ट टू SECP एक्ट, मुदारबा ऑर्डिनेंस, सिक्योरिटीज़ एंड फ्यूचर मार्केट एक्ट, इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से भी हम जो आपको सपोर्ट कर सके वो इंशाल्लाह हम ज़रूर आपको सपोर्ट करेंगे। और देखिए ये ब्रिक एंड मोर्टर इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एनवायरनमेंट इन विच वी वर्क, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर that is a very, very strong enabler to create the right environment. So once again जी आकिब साहब, I'm grateful to you कि आपने मुझे आज मदऊ किया, और मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि from Ministry of Finance we will continue to provide necessary resources, infrastructure, because by doing that we are investing in the future for our economy, and inshallah therefore the SEPC current and retired officials, ladies and gentlemen, media friends, Assalamu alaikum, and very good morning. Indeed, it's a historic moment, and I'm very happy to see something materializing. There was a struggle, as Chairman explained. 2015, the plot allocated was very small. So with our efforts, we got it in 2017. So it's almost 7 years that the actual project has been waiting to start. But surely we know that few years in Pakistan, last year, recent years, we have made quite a few losses. So now we should make up, and as Finance Minister said, we should try कि जितनी जल्दी हो सके इस project को within the timeline मुकर्रर करें. We are known कि हमारा cost overruns होते हैं, हमारी delays होती हैं, and it is a general Pakistan's history which must be avoided in this project. Meri affiliation in my 4 stints as Finance Minister has been very strong, and the man sitting here, Shamim Ahmed Khan Sahab, and myself, we converted the Corporate Law Authority on 1st of January 1999 to the present Security Exchange Corporation of Pakistan. Shamim Sahab, you did a good job, and I commend that. While I was coming, मैं सोच रहा था कि मैं शमीम अहमद खान साहब का जिक्र भी करूँगा, इनकी contributions का भी. He happened to be working with me throughout my political career. I remember when I was given first time the task of setting up the Board of Investment as Chief Executive Minister of State. The first person I traveled from Prime Minister office to Shamim Ahmed Khan Sahab office. He was Additional Secretary Production, Ministry of Production. And I offered him that Shamim Sahab, it's a challenge. Would you like to work with me? And we both set up this Board of Investment जो आज आप देख रहे हैं. So he accepted the challenge. We both set up, we are the founder, both individuals who set up the Board of Investment in Pakistan. So मैं इनको आज सुबह याद कर रहा था. I was extremely delighted to see while I reached here, he's already here. So Shamim Sahab, there's a long history. You see as I said, that there has been a huge history, and I believe that the capital market and the corporate sector, iski regulation jo hai, it can't be overemphasized. Because in I remember that when 2013 we had the chance, we did enormous efforts. For example, the 1984 Old Companies Ordinance was converted into 2017 Companies Act, first time in line with the international requirements. So I'm sure there would be more challenging things to be accommodated. A number of laws, Futures Act, all these acts are usually 2016-17. So I must fail in my duty if I don't recognize the efforts of Zafar Hijazi Sahab, in whose leadership, and Aqib Saeed and other commissioners, they actually did a great job during 2013 and 2017. So, I compliment him. मुझे याद है कि इतनी resistance थी. We are anti-reforms, unfortunately by habit. कोई तैयार नहीं था, ना लाहौर स्टॉक चेंज, ना कराची स्टॉक चेंज, ना इस्लामाबाद स्टॉक चेंज फॉर द मर्जर. मुझे याद है ज़फ़र हिजाज़ी साहब मेरे पास आए. It was probably 2014,
He said कि जी हमें 6 महीने और चाहिए. They had already got many extensions. I said nothing doing. You have no time and it has to be merged. Unless you use the writ of the state, इस मुल्क में कई चीज़ें नहीं होती. So I used the writ of the state and today we saw कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बनी, इसको इनाग्रेट किया गया, and within no time, by 2016-17, it became the best stock market of South Asia, 5th best in the world. This is the potential what finance minister was talking about. I have a belief this country and this economy has great resilience. We can do a lot, but road blocks जो है उसको आपको remove करना होगा. No matter what, in the national interest, just bulldoze. So मैं समझता हूँ कि ये जो एक सफ़र था जो 2013 से 17 हमने इकट्ठे सफ़र शुरू किया, इसमें इसके लॉज को रिफॉर्म्स किया, and there was a huge effort. Akko Saeed Sir was one of the commissioners in the team, and I always admired his his capabilities, and that's why the government decided when we came back last year that he should be the the chairman of the board. So I think he is well deserved. He has a proven track record of performance, but a lot needs to be done, I believe, a lot more. जहाँ तक the goal ये था कि हमारे corporate law भी और हमारी stock exchange भी should meet the international standards. जब तक आप नहीं करेंगे, आपने देखा कि पिछले साल से पहले पिछले 2 साल में जब बहुत ज़्यादा टर्मोइल थे तो about $1 billion foreign direct investment actually was flown out. It was taken out of the country. It has restarted flowing in. And as Aurangzeb sahab said कि ये जो reforms किए हैं, you see the PDM government had to me 1-point agenda to rescue Pakistan from default, full stop. Because there were certain forces within and outside who wanted Pakistan to default. And it was a big battle of 16 months. Alhamdulillah, whenever I had a chance, I said Pakistan will not default. So uske liye jo bhi humne kiya, the structural reforms agenda is this full tenure of Prime Minister Shehbaz Sharif government. We have taken a number of decisions, and we intend to take these reforms very seriously because Pakistan needs structural reforms in order to get rid of certain dependence on the foreign institutions. And I think we should stand up. आप चूँकि सारे corporate world के लोग हैं, तो मैं कहा करता हूँ कि पाकिस्तान has liquidity crisis. It is an asset solvent country because जब कहते हैं ना जी वो debt trap हो गया, पाकिस्तान पता नहीं किधर चला जाएगा, मैं कहता nothing will happen. Just don't worry. You predicted Pakistan will default once, twice, and dozen times in 18 months. Pakistan did not default. We proved it. So बात ये है कि Pakistan has that capacity. Don't forget कि 2013 में क्या पाकिस्तान था? What was the the international recognition of Pakistan? A macroeconomically unstable country, a country to no matter which government, which political party will form the government, will declare default within 6 to 7 months. This was Pakistan, and 10 to 12 years it will take to get out of the quagmire Pakistan was in 2013. By 2013, what happened? We put our foot down and we put our head down and we did our hard work. We introduced the reforms. We did everything possible. मैंने भी आपको स्टॉक एक्सचेंज की एक मिसाल दी है. Where did Pakistan reach in just 3.5 years? 24th global economy. Total macroeconomic indicators were positive. 4% less than 4% CPI. Food inflation 2%. GDP growth 6%. Stock market best, in the South Asia. Your forex exchange reserves hit the highest record, which अभी तक नहीं टूटा. So that is Pakistan resilience. That's Pakistan. तो ये मुल्क में resilience है. जब जो लोग आपको घबराते हैं कि जी 130 बिलियन का foreign debt है, कैसे होगा? कुछ नहीं होगा. Pakistan has proven, tested, certified reserves of minerals, granite, and all these $10,000 billion. So $130 billion liability is no challenge. The only thing is we have to streamline those assets. We have to make sure that all these assets are totally and properly, they are exploited and explored. So हमारी जो है ना जी ये एक negativity उसको हमें avoid करना चाहिए. पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह has a great potential. हमें पूरी तरह हमारा focus इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का focus है वो है कि जी structural reforms, the bilateral trade,
और उसके साथ साथ हमें इसको मुल्क को आगे लेके जाना है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो आपने देखा कि इस दफ़ा मुझे जो रोल दिया गया, मैंने डे 1 पे डिक्लेयर किया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में, फ्रॉम टुडे द कन्वेंशनल डिप्लोमेसी इज ओवर। दुनिया में अब जो है ना वो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। सो वी हैव बीन फोकसिंग all our missions abroad, Pakistan Foreign Affairs Office in Pakistan, we are focusing how to promote the foreign trade, bilateral trade. That is हमारा अब कभी एनालाइज करें इशू है क्या। We are twin deficit country, yes we are. क्या है, एक आपका फिजिकल डेफिसिट है रुपयों में, you can borrow rupees and you can handle it, but your external deficit, which is current account deficit, that you can't print foreign currency. So उसमें दोनों चीज़ें handleable हैं. So I remember in 2013, from the high level fiscal deficit, we brought it almost curtailed by 40%. So अभी भी जो प्रोग्राम है कि हम इसको, और उसके लिए हमें रिसोर्सेज जनरेट कर रहे हैं। अभी औरंगजेब साहब कह रहे थे कि पावर सेक्टर का रिफॉर्म, FBR रिफॉर्म्स, पाकिस्तान का पोटेंशियल रिपोर्टेडली 3-4 हज़ार बिलियन 3-4 ट्रिलियन रुपीज़ जो है वो वेस्ट हो रहे हैं। अगर इफ़ यू मोबिलाइज दोज रिसोर्सेज, योर दिस फिजिकल डेफिसिट डिसअपीयर्स। नाउ हाउ टू डील विद द करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट में यू आर टुडे 8% रफली ऑफ योर GDP एंड एक्सपोर्ट्स। ना कोई एमर्जिंग मार्केट आप कभी नहीं बनेंगे। मुझे कोई बता दे कि जी फलां एमर्जिंग मार्केट दुनिया में वो 12 से 15% टू GDP से कम उनकी एक्सपोर्ट्स हैं। सो इफ़ यू टेक इट टू 12%, between 48 billion to 50 billion, we are in business. We don't need any foreign, dependence on foreign institutions. So we have to work towards that direction. We have to increase our exports. उसमें IT का बहुत बड़ा potential है. उसमें हमारा जो focus होना चाहिए वो non-traditional जो items हैं, जो हमारे area जो हमने explore ही नहीं as a country कर सके. तो exports को बढ़ाना और इसको इन दोनों deficits को मैनेज करना is the main agenda of Prime Minister Shahbaz Sharif government. And alhamdulillah we are all as a team working to get these things done. अभी फिश का जिक्र किया, your global वो जो है आपके लॉन्ग टर्म इश्यूर के ऊपर उन्होंने एक नॉच ऊपर किया है. I'm sure inshallah in times to come it will go better. Your policy rate has gone down already from 22 to 19.5. So things are, your inflation has gone from 30s से कम आके अभी करीबन close to 12%. So your things are moving. The prolonged inflationary pressures have receded, and things are improving with the actions of the government. So hopefully, I think it should not take too long. But I remember Fitch projecting Pakistan in April last year, 2023, that it will May 2023 Pakistan will default by 30th of June. So रीज़न कि उस वक्त हमारे पास 3.7 बिलियन के स्टेट बैंक में रिजर्व थे और इतनी रफली हमारी पेमेंट थी अगले मई और जून में. So they were right in number crunching, but we had beaten them by our actions. And Pakistan not only did not default, but also had very improved results, and the term deficit was brought down from the high 20s to $2.4 billion last year. तो पाकिस्तान में ये सारी जो पोटेंशियल्स हैं ये सारी की सारी हमें इसको स्ट्रीमलाइन करनी है, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को ठीक करना है. उसके लिए हमने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक्शंस ले रहे हैं. यू हैव सीन दैट इन ऑर्डर टू गिव ए वन विंडो फैसिलिटेशन टू द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर particularly, and also the local investors. SIFC has been created. This is special investment facilitation center in which all divisions उनके नुमाइंदे उसमें मौजूद हैं ताकि पिलर टू पिलर, डोर टू डोर लोगों को ना जाना पड़े. तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा फ्यूचर है उसमें हमें सब में फेथ होना चाहिए अल्लाह ताला के फजलो करम से. एज ए सेड कि पाकिस्तान हैज़ लिक्विडिटी प्रॉब्लम. मोस्ट ऑफ यू हैव सीन इन बिजनेस इज लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स, बट इट इज़ asset solvent country. I keep saying this thing. It is asset solvent country. It is up to us as Pakistanis that we should try to streamline the assets which Allah has blessed this country with. So inshallah things will certainly improve. जहाँ तक चेयरमैन साहब ने कुछ लॉज में अमेंडमेंट्स का जिक्र किया है, my support will be there in the parliament, in the finance ministry. Aurangzeb साहब will fully support you. I'm sure we'll work together to make all the necessary amendments which are required in reforming these laws, because कोई चीज़ perpetual नहीं है.
दिस एवोल्यूशन प्रोसेस। सो जो चीज़ हमने अपना 2017 में की थी, इन द नेक्स्ट 7 years दे माइट रिक्वायर मजीद इम्प्रूवमेंट्स। सो वी शुड ऑलवेज बी रेडी एंड मूव ऑन। डिजिटाइजेशन का और जो रिफॉर्म्स की बात की चेयरमैन ने भी और फाइनेंस मिनिस्टर ने भी, yes, this is the roadmap of our government, and particularly it should be of SECP. तो मैंने जैसे अर्ज किया कि मेरी तो बहुत लॉन्ग मोर देन क्वार्टर ऑफ सेंचुरी की एसोसिएशन है with this institution, and its late Dr. Tariq Hassan, I basically brought him in 1999 from World Bank. Usually it is unusual to send on secondment to your own country of origin. तो मुझे वुल्फ हसन उस वक्त प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड बैंक, ही सेड के मिनिस्टर वी अंडरस्टैंड यू वेरी वर्कॉलिक एंड दिस सो प्लीज टेल अस इफ वी कैन गिव यू ह्यूमन सपोर्ट। सो आई सेड के यू नो सेंड दिस, ही वाज इन द लीगल चेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक, सो आई सेड हमें दें। तो तारिक हसन आए, you know that he initially was one of the person who has been involved in the debt responsibility and debt limitation act में उनको involve किया, फिर मुल्क में coup हो गया। Then he became also very active, and also as one of the former chairman of SECP. Late Tariq has also contributed a lot. I must acknowledge all the chairmen, past chairmen, उसमें उन्होंने अपना अपना हिस्सा डाला। और अभी भी जो इनकी SECP का बोर्ड है, मानवी वाला साहब हैं, इनके साथी हैं, ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड है, जफर जाजी साहब हैं, उनके साथी हैं। तो ये सारे लोग जो है आपके अपनी कमिश्नर्स द टीम, you are one of the professional institution in the country which needs to be further strengthened in terms of reforms, in terms of its policy making, in terms of it, enabling laws, etc. But government की support जो है वो would be there inshallah. जहाँ तक इनकी मुख्तलिफ जो है इनके जो अमेंडमेंट्स हैं, वो अगर ये लॉ मिनिस्ट्री से लॉ सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, उनसे शेयर कर लें, ये लॉ सेक्रेटरी साहब देख लेंगे, फिर ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विल गिव इट्स इनपुट, एंड आई विल मेक श्योर that in the parliament we get those through inshallah in the minimum possible time from the National Assembly and the Senate. So it should not be difficult. Anyway, it's a very lucky day. हमारा कम से कम I'm very happy, क्योंकि वो ड्रीम जब पूरी होती है तो बड़ी खुशी होती है। ये पिछले डेकेड में इसके लिए बहुत कोशिश की गई, और इवेंचुअली नाउ वी आर इन ए पोजीशन कि अल्हम्दुलिल्लाह आज उसकी इनागोरेशन हो रही, अर्थ ब्रेकिंग हो रही है। तो इंशाअल्लाह I wish all of you Delhi Mubarakbad to all the SECP, from chairman to the every official of the SECP. Inshallah, any assistance which is required from the finance ministry, as Aurangzeb said, they will be forthcoming, and any assistance the SECP would require from me, either in the parliament or otherwise, inshallah that will be forthcoming. So once again, heartfelt congratulations chairman साहब, आपको, आपकी टीम को, सबको, और wish you all the best. Inshallah, Pakistan has strong potential. Please have a faith. Pakistan has a strong potential, and we should live with the hope, and with the hope we should act upon. And अगर हम कोशिश करेंगे, as I said, I quoted you 2013, 2017, just to show you what resilience this country and this economy has. From nowhere to 24th global economy. PricewaterhouseCoopers ने क्या कहा? This country, the way it's going on, it will join within few years the G20, Global 20. Unfortunately, because of our own messing around, the political instability and whatnot, we reached 47th economy in the next 5 years. So it's very unfortunate, and I think we should work together to bring Pakistan back in the economic committee of the nation and join G20 as soon as possible. Thank you very much. Pakistan Zindabad. तिजारत का फ़रोग़ हमारी तवज्जो का महवर है, मरकज़ है। वज़ीर आज़म की पूरी